Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So being a CLAT aspirant is clearly not easy, and along with CLAT and AILET, we have this third exam lined right after that, which is obviously the first half of December. On 13th and on 15th December, we have this SLAT 2025 exam right now. This exam generally used to happen in May and June every year. ठीक है, May या June में ही होता था. But this time they have prepared, Symbiosis Law School ने ये prepare किया है कि हम इस एग्जाम को CLAT और AILET के बाद ही करवा देंगे. The application forms are open till 22nd November. You guys can fill it till then. But a major problem is कि should we prepare for it? और अगर उसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो won't our CLAT preparation, our 12th standard preparations for some, our AILET preparation would suffer. So in this session, I will give you a complete guide as to how to go about this exam, because some of you would like to take SLAT as your backup. It has 4 colleges across India, which is Symbiosis Pune, Noida, Hyderabad and Nagpur. So you guys would want to become a part of this cohort as a backup if CLAT in case does not work out. But the question is how to go about it. What are certain things that you can do in this particular exam, and that's a very important consideration. So the first very important thing you need to keep in mind is, if you are preparing for CLAT, you will get free on 1st of December, which is the CLAT date. You will have the next 10, 11, 12 days to prepare for SLAT as well. तो आपको उसमें अलग क्या करना पड़ता है? You have to do analytical reasoning, you have to do bit of static GK, and you have to do that GK today वाला part, which you can do now for CLAT also, because that is going to be crucial for CLAT. ठीक है, वो CLAT के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप वो अभी भी कर सकते हो GK today particularly. Static GK and analytical reasoning are also parts of AILET. So if somebody is a CLAT aspirant as well as an AILET aspirant, you don't have to do anything different for SLAT in that case. You are very much covered. आप SLAT को इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छे से दे सकते हो, provided you have prepared for both these exams really properly. लेकिन SLAT का पैटर्न काफी अलग होता है, SLAT के क्वेश्चंस काफी अलग तरह से होते हैं from CLAT and AILET. तो you might need to solve certain mock tests in SLAT, right? तो वो पर्टिकुलर चीज की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हो. We have a SLAT 2025 mock test series. You can become a part of that, or you can do one in a week. ठीक है, आप वीक में एक मॉक टेस्ट कर सकते हो. That will be good enough. 1 घंटे का ही मॉक टेस्ट होता है, so it will not take a lot of your time. आप सुबह के टाइम पर इसको आइडियली करना है. This exam happens in the morning, so you can do it from 10:30 to 11:30, 11:30 to 12:30 टाइप का जो टाइम होता है, उस टाइम पर ही करना, because that is the general time of this exam, right? तो हमने CLAT की स्ट्रैटेजी कई बार डिस्कस कर ली है. वी हैव डिस्कस कि आपको 2 टॉपिक दिन में करने चाहिए. यू शुड डू करंट अफेयर्स एवरी डे, मॉक टेस्ट के बारे में, सेक्शनल टेस्ट के बारे में, करंट अफेयर्स, बैकलॉग्स एंड व्हाट नॉट. This exam will not need anything significant extra if you're already preparing for CLAT and AILET. It won't be a very big problem. But अगर आप सिर्फ CLAT के लिए prepare कर रहे हो, तो भी don't, you could say, let your CLAT preparation suffer, because अपने आप में CLAT is so difficult. है ना, we can't prepare for any other exam. It is not in our control anymore, right? So no need to lose your patience. No need to get very anxious about this exam. अगर आपको SLAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप थोड़े थोड़े बीच में मॉक टेस्ट डालते रहो. हफ्ते में 1 घंटा निकाल लो, कोई खास बड़ी बात नहीं होती है. तो आप उस 1 घंटे में एक SLAT का मॉक टेस्ट कर लो एंड सी वेयर यू स्टैंड. तो आप अगर एक पर्टिकुलरली एक एनालिसिस शीट बना लोगे ना कि भाई दीस वर द काइंड ऑफ मिस्टेक्स आई वाज मेकिंग, तो आपके पास वो 10 दिन होंगे उसको सॉल्व करने के लिए, और वो 10 दिन में सॉल्व होता है. ऐसा आपके पास ऐसे नहीं होगा कि मेरे से पूरा पेपर ही सॉल्व हो पाया. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. लीगल बहुत आसानी से सॉल्व होगा आपसे, है ना. लीगल का तो ज्यादा बिट आता भी नहीं है, ठीक है. वो तो मतलब अगर चांस वाली बात है, अगर आएगा तो आएगा. तो इसीलिए यू कैन डू इट. इट इज वेरी सिंपल सेक्शंस, वेरी सिंपल डिवीजन. 5 सेक्शन होते हैं, 12-12 नंबर के, 60 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मिनट्स का टाइम होता है. स्मॉलर क्वेश्चंस, वेरी मच डूएबल. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, द एग्जाम इज ऑन 13th एज वेल एज ऑन 15th. राइट बोथ द एग्जाम्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट ईयर हुआ था, व्हाट हैपेंड इन SLAT 24 वाज पीपल समटाइम्स रोट जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्स, है ना. उन्होंने फर्स्ट वाला लिखा, सेकंड वाला नहीं लिखा, या फिर सेकंड वाला लिखा, फर्स्ट वाला नहीं लिखा. अब द फर्स्ट वाला एग्जाम वाज सो डिफिकल्ट द सेकंड एग्जाम दैट पीपल हु डिड द फर्स्ट एग्जाम ओनली वर नॉट एबल टू क्लियर टॉप कॉलेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम. उनको पुणे और नोएडा मोस्टली केसेस में नहीं मिल पाए थे, बिकॉज द पेपर वाज सो डिफिकल्ट. तो इसलिए दोनों ही लिखना. दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन और रैशनलाइजेशन. तो 13th और 15th को जो आपके एग्जाम्स है, प्लीज राइट बोथ ऑफ देम, है ना. डोंट बी, यू कुड से, डोंट अज्यूम कि इस बार सेकंड इजी आएगा, फर्स्ट इजी आएगा. यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क. तो इसलिए इस पर थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है. थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग यूज कर लेना. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 13th को अगर मान लो दोनों भी सेम लेवल के पेपर आए, तो 13th को आपको पेपर देकर ये रियलाइज हो जाएगा कि आपको अगले 1-1.5 दिन में 2 दिन में करना क्या है, टू बी एबल टू डू बेटर इन द नेक्स्ट एग्जाम, राइट. तो दैट गिव्स यू अनदर स्कोप. तो जो लोग AILET दे रहे हैं, SLAT दे रहे हैं, CLAT दे रहे हैं, उनके 15 दिन में 4 एग्जाम होंगे, है ना. तो इट विल बी, इफ यू लाइक कह सकते हो, SLAT तक जाते जाते आप काफी कैजुअल हो जाओगे एग्जाम्स के बारे में,
है ना, बिकॉज यू ऑलरेडी डन क्लैट, यू ऑलरेडी डन एलेट, और हो सकता है कि आपका क्लैट और एलेट इतना ज्यादा अच्छा हो जाए कि आपको स्लैट देने की जरूरत ही ना पड़े. इट इज जस्ट अ बैकअप, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लैट का रिजल्ट आपका स्लैट एग्जाम से पहले आ जाएगा. तो यू वुड एट दैट पॉइंट इन टाइम यू एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन द थिंग इज यू विल नॉट बी एबल टू फिल योर फॉर्म्स एट दैट टाइम. फॉर्म्स विल गेट ओवर बाय 22 नवंबर इटसेल्फ. तो आप फॉर्म भर के रख सकते हो. यू कैन डू द एग्जाम इफ यू फील लाइक इट. इफ यू डोंट फील लाइक इट, यू फील कि मेरे को क्लैट में अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा, you are good to go, not a problem there, right? It is just a backup and will serve as a good backup. Again, I'm repeating it, don't try to prepare too much for this exam. Don't prepare सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स कर लो, सॉरी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट कर लो, नॉट द करंट अफेयर्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट कर लो, एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू अ लॉट. उसके अलावा अगर कोई क्लैट और एलेट 25 की तैयारी कर रहा है, यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर क्रैश कोर्स संकल्प. वी आर गोइंग टू बी गाइडिंग यू एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, एंड यू नो आवर रिलायबिलिटी एज वेल एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स वी हैव. So we're going to be guiding you till the end of the preparation with more than 300 classes, a lot of mock tests, a lot of sectional tests, a lot of doubts that we are going to be taking in separate classes, strategy classes. We have a separate doubt tab, so it will provide you a complete infrastructure online to prepare for this exam properly. I have given the link for the same in the description. You can always contact us on these numbers. They will guide you sufficiently for the exam. You can visit us at 12minutes2clat.com if you use a laptop or a system. अगर आप फोन यूज करते हो तो you can download our application from Play Store and App Store and start working with us right away. This is the time where you can actually grab this exam, make it very strong for yourself, and I am sure that you guys have the ability, just that I think slightly that application is missing, right? तो वो भी अभी आ जाएगा. So that is it. अगर आपको SLAT से related कोई भी और डाउट है, mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. मॉक्स जरूर कर लेना ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए और आप बैकअप के लिए भी थोड़े से सॉर्टेड रहो. 1 घंटा निकल सकता है एक हफ्ते में, राइट? लेट्स नॉट मेक एनी एक्सक्यूज देयर. ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू इन क्लास.